Hello everyone. Thank you so much joining the CISSP class. So today we are going to discuss the personal security policies and procedures. Okay. So this is our second module, and here we are going to cover the entire risk management process, how risk is defined, how calculated, and everything will be covered in coming modules. Okay. So let's discuss how as a human or your internal employee and users important to the organization and what are the risks associated with them. So we need to discuss the entire things. Okay. First is the human weakness in the security solutions. So when we talk about the human security, human beings weak, the weakest elements in security solutions, we are referring to the fact that no matter how sophisticated our security measures are, people can often find a way to get around them. Okay. Imagine you have a highlighted security building with access control systems, okay, biometric scanners and surveillance camera. Despite this measure, an employee might share just a second. Uh, yes, share their access card with colleagues who should not have access. Okay, or someone might tailgate behind an unauthorized person to gain entry. Okay, this highlights how human can undermine even the best physical security system. तो आप इसको ये फोकस करके अगर आप व्हेन वी से सो व्हेन वी से दैट ह्यूमन वीकनेस ना आप इसको एज ए आपका इंटरनल एम्प्लॉय समझो. ठीक है. यू नो कि अगर उनका क्रेडेंशियल्स वगैरह बिकॉज आई आल्सो शेयर विद यू दैट आई वन ऑफ माय एक्सपीरियंस विद वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो क्या होता है वहाँ पे कार्ड वगैरह भी दे हैव शेयर विद देयर रूममेट्स और सम वन लाइक दैट. अब ऐसा कोई चैलेंज भी कर लेता हाँ तुम मेरा ऑफिस में घुस के दिखा दो या समथिंग लाइक दैट, राइट. सो आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, द रियल टाइम एग्जांपल व्हाट वी हैव फेस्ड इन आवर टिल डेट. सो आप इसका इम्पैक्ट समझो, इसको अंडरस्टैंडिंग करो कि अगर कोई आपका आप कितना भी बेस्ट फिजिकल सिक्योरिटी लगा रहे हो, आप कार्ड कोई दे रहा है बिकॉज लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी गार्ड. ठीक है. तो आप खुद सोचिए कि एक्सेस सेंटर लगा के रखे हो, आप बोलोगे नहीं अगर आप उसको कार्ड के थ्रू से वो खोल रहा है. ठीक है. आपको फिजिकल सिक्योरिटी का जो गेट है आप लेट सपोज कार्ड से यहाँ तो जब खुलता है तो ये आपको ओपन कर रहा है. बट आप अगर यहाँ पे एक एडिशनल लेयर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डिफेंस इन डेप्थ, लाइक आप बोलो ठीक है एक्सेस कार्ड तो चाहिए, उसके अलावा भी आपका आई रेटिना, ठीक है, आई रेटिना चाहिए, या फिर आप कुछ ऐसा कर लो कि वॉइस कमांड और वॉइस कमांड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फिंगरप्रिंट वगैरह भी बाईपास हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डिजिटल फॉरेंसिस एंड अदर फॉरेंसिस में वी हैव फाउंड लॉट्स ऑफ सस्पेक्ट दैट आपका अगर वी हैव सीन लॉट्स ऑफ सिक्योर एंड अदर डिवाइसेस हैव बाईपास्ड. किसी का फिंगरप्रिंट ऑल्सो दे हैव वो इजीली हो जाता है बाईपास. बट आप देखो कि अगर आई रेटिना से कुछ भी होता है आपका जो फिजिकल उनका जो ओडीसी रूम फ्लोर या कुछ भी होगा उस पर से अगर जो एक्सेस है दे कैन एबल टू एक्सेस, राइट. सो बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी आते हैं, कैन ऑलवेज बी फोकसिंग फॉर ए नॉट टू रिले द मेन फोकस विल बी कि आप एक सॉल्यूशंस पे आप रिले मत करो. यू शुड ऑलवेज बी एटलीस्ट ए वन लेयर ऑफ एडिशनल security implemented in your environment, because one is going to compromise, then your second should be at least insecure. Consider human behavior. When designing security solutions, it's essential to take a human behavior into account. Okay? For example, if you are implementing a password policy in your organization, you need to understand that people tend to use easily guessable password like 123 456 or password. Therefore, your policy should include guidelines for creating strong and unique password to counteract this human tendency. ठीक है. तो आप हमेशा ये ह्यूमन बिहेवियर पे सोचो कि हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ थोड़ा इजी रहेगा तो याद कर सकते हैं. आप बोलो नहीं 8 कैरेक्टर का या 10 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका रहेगा, एक कैपिटल रहेगा, देन कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, देन फिर आप बोलो कि कुछ नंबरिंग कर सकते हो, देन फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, देन आपका फिर कुछ कैपिटल रहेगा, देन कुछ स्मॉल लेटर रहेगा. So based on that आपका can it will be a good practice and great practice to implement in the environment कि आप हमेशा रिले मत करो कि इजीली कोई भी चीज़ हम लोग पॉलिसी करते तो हम अब अभी ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वी आर ओनली फोकसिंग फॉर द योर हाउ ह्यूमन बिहेवियर, राइट.
तो हम लोग क्या होता है कि हाँ कुछ भी इजीली हो जाए, जैसे आप यूजर @1234 या समथिंग लाइक दैट, आप बोलोगे नहीं अगर 20 हिस्ट्री या 30 हिस्ट्री तक जो आप पासवर्ड आ जाए वो यू कैन बी एबल टू रिकन्फ्यूर इन योर, और आप उसको रीसेट नहीं कर सकते। रीसेट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, रीसेट इज द रॉन्ग वर्ड, बट आप उसको रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो सेम पासवर्ड आप बार बार यूज नहीं कर सकते, सो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू फोकस ऑन इट। ह्यूमंस एज ए सिक्योरिटी एसेट, व्हाइल ह्यूमंस कैन बी ए वीक पॉइंट, ठीक है, they can also be a valuable assets if trained properly. This is the major thing we need to focus on. When any of the big organizations have hacked till date, 90% आपका 90-95% आपका यूजर अवेयरनेस की वजह से हैक होता है, ठीक है, जो आपका एंड यूजर काम कर रहा है, बिकॉज we are not committing, they are not educated or something like that, but when we talking about from a cyber landscape, जो हम लोग का ट्रेनिंग होता है, राइट, साइबर अवेयरनेस ट्रेनिंग हो गया, फिशिंग एक्टिविटी ट्रेनिंग हो गया, फिशिंग सिमुलेशन हो गया, बिकॉज इफ आई ऑलवेज ट्राई टू फोकसिंग इन माई एंड यूजर, तो यहाँ पे आपको आप कितना भी बड़ा सोल्यूशन लगा लो, ये आके अगर सिंगल एक लिंक में क्लिक करता है, देन योर कंप्लीट एनवायरमेंट हो, आप कुछ भी लगा लो, फेयरवेल हो गया, वेब ऑकोमाई, हनीपॉट, कैश बी सॉल्यूशन फॉर योर क्लाउड, डोम 9, आप आपका एनी एनी वेब ऑकोमाई, एनी आप कुछ भी लगा लो, इफ यू आर नॉट ट्रेंड योर एम्प्लॉय, देन ये कुछ भी काम नहीं करता। आप रियल टाइम बेसिस पे जैसे हम लोग फायरटेल करते हैं, तो रियल टाइम आप ट्रेनिंग लेवल पे इनको कुछ एक्टिविटी करवाना चाहिए, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग दैट, बट इसको हम लोग थोड़ा सा और इन डिटेल वी नीड टू फोकसिंग ऑन इट, कि हाउ दे कैन मेच्योर सिक्योर बेस ऑन दैट, ठीक है। लेट्स से यू आर एजुकेटेड योर एम्प्लॉय अबाउट द फिशिंग एक्टिविटी, अभी हम लोग जो डिस्कस किए फिशिंग एक्टिविटी, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस ईमेल्स। Now, if an employee receives an email with a suspicious attachment, sorry, sometimes my voice will be lacking. Suspicious attachment, they are more likely to recognize the threat and report it. ठीक है, thereby preventing a potential security breach. अभी क्या होता है, बहुत सारे ईमेल आईडी, ईमेल वगैरह पे हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि अगर कोई एंड यूजर उसको सस्पिशियस फील करता है या कुछ उसको लगता है कि कुछ मेलिशियस इसमें कंटेंट है, तो विदाउट क्लिकिंग एनीवेयर ना उसको वहाँ पे आप रिपोर्ट एज ए फिशिंग, रिपोर्ट एज ए फिशिंग अलर्ट, या जो भी आईएसओ टीम करते हैं, तो उसको क्या होता है फिर ऑटोमेटिक एक रीमेल जनरेट होता है कि थैंक यू, वी आर फ्रॉम आईएसओ टीम एंड थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग अस। सो इन दैट पर्टिकुलर ईमेल ना, दैट विल बी टेक केयर बाय द सिक्योरिटी टीम, और जो भी बैकएंड में उसका ईमेल सिक्योरिटी टीम है जो भी उसको कंपेयर करके रखे। सो इट इज अ गुड प्रैक्टिसेस, ऑलवेज वी नीड टू फोकस एंड ट्राई एंड एजुकेट आवर एम्प्लॉय, ठीक है। When we say employee, end user, anyone, all people are end user, right? That could be a CISO, CEO, CXO, CFO, anything. Collaborate approach, ठीक है, rather than treating personnel as a problem, it is very beneficial to involve them in a security effort. For instance, if your organization is developing a new software applications including security training, right? For developers can be lead to better code practices and fewer vulnerabilities. This collaborate approach enhance security from the group up, ground up. Human involvement at all stages. This is a major thing. Also focus. Okay. Human influence is present throughout the security solutions lifecycle. Suppose a company is implementing a new firewall, ठीक है, user need to educate how to use it correctly. Designers must configure it effectively. They should be follow a best practices. They should be properly follow a policy and procedure what is defined by the the companies, ठीक है। और ऑल्सो दे फाउंड दैट कुछ डिजाइन लेवल पे गैप होता है, दे शुड ऑल्सो हाईलाइटेड टू द मैनेजमेंट कि हाँ ये आपका इसमें रहना चाहिए, बट यू हैव नॉट समथिंग लाइक दैट, दैट इज द रीजन। कभी भी हम लोग एक होता है ना कोलाबोरेशन, इज द मेजर थिंग टू फोकस व्हेन वी टॉकिंग अबाउट वर्क विद साइबर लैंडस्केप और एनी अदर लैंडस्केप आल्सो, राइट। कोलाबोरेशन बहुत जरूरी होता है, दैट इज द रीजन। आपका कोई भी डिजाइन होता है तो नेटवर्क टीम, आपका सिक्योरिटी टीम हो गया, आपका फ्रॉम पीटी लेवल पे भी समवन कैन
interest they can also join. Then आपका फिर होता है कि आपका यानी आर्किटेक्ट लेवल पे कोई किसी को हम लोग हायर करते बात करते हैं इट इज इन्वॉल्व सीसो. ठीक है. Programs need to ensure it functions as intended, and when you're most overseas, its maintenance. If any of these groups misunderstand their roles or neglect security practice, it could be lead to vulnerability. When we're talking about the vulnerabilities, हो गया risk हो गया आपका. Anyone hacker comes from the environment and they can easily manipulate and compromise your company. ठीक है. So based on that, you need to focus each and every parameter. That is the we always say that आप hire well skilled people. और उनको आपको किसी को अगर नहीं आता है then you can train them properly, give them exposure to learn. आपका environment को properly आप समझो because we need to first understand our business. कभी हम लोग कोई चीज़ implement करते हैं तो focusing on our business को what is actually what we are doing, पर्पज क्या है, देन बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू. उसमें फिर आपका क्या होता है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द रिस्क ना. आपको इसलिए मैं आपको थोड़ा बोल रहा हूँ इसमें कि बिजनेस के रिलेटेड आप पहले बिजनेस समझो, आपका एसेट वैल्यू समझो. हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका व्हाट इज एसेट वैल्यू. आपका एसेट वैल्यू के हिसाब से यू कैन डिस्कस विद द रिस्क फैक्टर कितना क्रिटिकल है आपका एसेट, राइट. Conclusion: understanding the human elements is crucial in cybersecurity. By acknowledging both the potential weakness and strength for human behavior, ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है और ये आपका बहुत ही वीक पॉइंट है. दैट डिपेंड्स हाउ बीइंग ए लीडरशिप टीम और फ्रॉम ए top to bottom how you can use people in a right manner, right. We can design more effective security solutions and involve all stakeholders in safeguarding our digital environment. Remember, security is not just about technology. Again, I am repeating that it is not only a 500 hardware software applications firewall लगा लेते हो. It is not work that way, right? Here we have discussed. It's about people working together to protect value assets and information. So, आपका जो internal end user है, they should also more take precautions and not precautions. When we talking about the end user, they should well skilled, well understand your risk. अगर उसमें कुछ अगर क्लिक करते हैं इम्पेक्ट करते हैं, they should understand the seriousness कहाँ पे बिजनेस डाउन हो गया. And yeah, they should also take accountability for each of the everything. बिकॉज सिक्योरिटी सिर्फ आपका सीसो सी एक्सओ सी टी आई हो, कोई भी लीडरशिप हो या कोई भी टीम काम करते, सिक्योरिटी सबके लिए है. एंड सेम अकाउंटेबिलिटी होता है फॉर योर एंड यूजर नेटवर्क. बिकॉज अगेन आई रिपीटिंग, आपका 90-95% हैक यहाँ के वजह से होता है फॉर योर लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ नॉलेज एंड यूजर नेटवर्क. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज लेट मी नो इफ आई वांट टू improve somewhere else. Definitely I can. Thanks.